Hello everyone, this is Barira and you are watching my channel The Wellness Valley. आज के एपिसोड में बहुत स्पेशल गेस्ट. आप कहेंगे कि हर एपिसोड पे मैं कह रही हूँ स्पेशल गेस्ट, बट यस शी इज द वन, मिस अमीमा सईद. हेलो. Hello, Barira. Thank you for having me. Before we jump into the story, a person will be sharing who has touched, inspired and moved her life. पहले ये जानते हैं कि मिस अमीमा करती क्या है. जी मिस अमीमा. मैं कमाल करती हूँ इन शॉर्ट. मैं जो है वो एजुकेशन सेक्टर से मुंसलिक हूँ प्रोफेशनली for the last 23 years now. You know, in my head, I'm still a student. So it seems like I just stepped out of the university और मैं अपने करियर में घुसी हूँ. So I work as a researcher, as a program developer, as an implementer of different educational programs, as a advocate for policies, educational policies. So ये मैं professionally करती हूँ. Currently I'm affiliated with Indus Valley School of Art and Architecture, where I head a program which is called Continuing Education Program. And as the title of the program suggests, that it's all about second chances. It's about curating talent, toiling our soil and society in a way that it becomes embedded with the ecology, with life, with culture, with arts. So that's what. So in short, हम conflict resolution जो कि इतना पाकिस्तान बिखरा टूटा, कराची बिखरा टूटा वो है. So we are in our own little ways, we are trying to bring everyone together and make them connect to heart, hand and mind together and soul. That's what we do. Heart, hand, mind. Mind. Together. Wow. सारी चीजें इकट्ठे करेंगे ना तो दिमाग सही रहता है, वरना जो है वो अपने आप को अल्लाह मियाँ से बड़ा समझने लगता है. ह्यूमन बीइंग्स आर लाइक दैट. सो ये चलें जी, अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं. तो बहुत सारे मोमेंट्स लाइफ में ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं. तो टॉपिक बहुत डाइवर्सिफाइड है, बट इसको कोई एक शख्स के बारे में जानना चाहूंगी. आपकी स्टोरी क्या है? So it's about one person that I met. It was a chance encounter, basically back in 2005. क्वेटा के अंदर मैं उस वक्त खान एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान के साथ काम करती थी और मैं हेड थी रिसर्च की यूनिट की साउथ में. और एक अदद कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ पे, लर्निंग सोसाइटीज कॉन्फ्रेंस. और वहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन है IDSP के नाम से, जो कुरतुलैन बख्तियारी जो है वो उसको हेड करती थी. और वो कुरत आपा खुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ के अपनी ज़मीन से लोगों से काम करती हैं. शी इज़ अ बिग नेम इन पाकिस्तान फॉर एम्पावरमेंट. तो वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस में हुआ ये था कि इंडिया से भी लोग आने थे, ईरान से भी लोग आने थे, मुख्तलिफ जगहों से लोग आने थे. आखिर में कोई हंगामा शुरू हो गया, क्वेटा की इमरजेंसी का इशू हुआ और सिर्फ 2 लोग जो हैं वो आ सके थे बाहर से, और उनमें से एक जो है वो थे मुना लखानी. सो वो आए थे साउथ अफ्रीका, जोबर्ग इसको कहा जाता है, जोहानिसबर्ग में वो उस वक्त होते थे. एंड ही वाज अ जीरो वेस्ट एक्टिविस्ट. So he ran his own institution and a collective जिसके अंदर वो सारा जो है कि जिंदगी के अंदर वेस्ट जो है वो आप ना क्रिएट करें एंड उसको ऑर्गेनिकली अगर आप जिएंगे इक्वालिटी से जुड़ के. So उनकी जो प्रेजेंटेशन थी, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आई गॉट कनेक्टेड. अच्छा, इट वाज क्वेटा, सो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अंग्रेजी में फ्लुएंट नहीं थे. तो मैं बन गई थी ट्रांसलेटर. मैं ट्रांसलेटर बन गई थी. तो समझो कि मैं 4 दिन की वो कॉन्फ्रेंस थी और 4 दिन में मैं एक हमारे पैलेस्टीनियन वो थे मुनीर फाशे,
और एक थे मुन्ना लखानी जो कि साउथ अफ्रीका से आए थे। और मैं उन दोनों के लिए ट्रांसलेटर थी, और वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में, कम्युनिटी में, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, फार्मर्स के साथ, सबके साथ बात कर रहे थे, और मैं सबके साथ वहां पे जुड़ी हुई थी। तो और लोग मुझसे अक्सर आकर वहां पर पूछे थे, मेरे यहाँ से कराची से साथ जो कॉलीग्स गए थे, तुम थक नहीं रही, तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया वही सारी बातें सुनकर? मगर बरीरा, लिटरली आई वाज अप कोई 20 hours and I was charged, and those things that I heard them say then and then later on figured out वो अपनी stories और वो सारी सुना रहे थे, they are so inspirational, they still to this date guide me. So Muna Lakhani is a person, you have seen me, right? So, conventionally, and especially in Pakistan, nobody would call me beautiful, right? They can call me a pleasant person, or, yeah, हमेशा, you know. So my sister is drop dead gorgeous, और family में जब भी कोई वो बात हो तो she is the beautiful one, और तुम्हारे चेहरे पे मासूमियत बहुत है उधर, which was a roundabout of a saying कि तुम इंसान की बच्ची तो हो, but या खूबसूरत नहीं कहलाई जा सकती. He's the first one. So when I met him, he was must be मैं तो I think 2005 में I was what, 1997 से 2005, gets to be 26 or so. He must be 50 something at that point in time, and was an activist. Well, वो settle सारी चीजें, and he was the first person who said to me, और आपको पता है कि जब भी कोई आपको compliment दे तो you get a little awkward also. Yes. So I think he is the first one who taught me how to accept a compliment and accept praise with grace. So he said, just say thank you, hands folded, thank you, because जो दूसरा सामने वाला इंसान समझ रहा है वो उसका वो है. Don't try to correct him or her. Don't try to say कि नहीं नहीं कोई बड़ी बात नहीं है. Just say वो उनकी ह्यूमिलिटी है कि वो तो आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और आपकी ह्यूमिलिटी ये होनी चाहिए कि आप उसको ग्रेस से एक्सेप्ट करें. That was the first time somebody taught me how to respond to a compliment, you know. And he was, इतनी बातें करने में, there was this one incident जहाँ पे वो सेमिनार रूम का थोड़ा कंफ्यूजन था, एक मुशायरा भी होना था, और ये छोटी लड़कियां थी सारी गांव की जो एक्टिविस्ट के तौर पर, कम्युनिटी पर्सन्स के तौर पे काम करती हैं, तो उनको भी उसी कमरे में बैठ के वी वर हैविंग दैट सेशन. तो हमें एक दफा कहा गया कि वो कमरा खाली कर दें, तो उस पर जो है वो उन्होंने कहा कि बस आधे घंटे के अंदर खाली कर देंगे, अभी तो टाइम है. सो देन वन ऑफ देम, जो कि वो छोटी उनकी कोई मेंटोर वगैरह थी, शी वाज कॉल्ड इन एंड शी वाज आस्क्ड के वो कर दें. वो टेंशन में आ रही थी वो कि बॉस उनकी कह रहे हैं ऑल ऑफ इट. सो उसमें मुना सेड के, एंड अगेन a lot of first that he taught me. तो फेमिनिज्म क्या होता है और फेमिनिज्म की क्या एक्चुअल डेफिनेशन है, that's what he explained to me then. So जब ये बहुत दफा वो हो रहा था तो he said कि do you see how men can get into this whole violence, gender violence के उसमें, because they cannot accept no. No is a no is a no. आप उनके पावर को इतनी सी चीज के साथ उनका पावर चैलेंज हो रहा है कि आधे घंटे वो इंतजार कर ले, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उसको. एंड सो ऑफन टाइम्स ऑनर उसमें कोड में आपको शेम किया जाएगा, आपको गलत बताया जाएगा, बट इट्स बेसिकली you need to be clear in your head. Let the world say whatever, but you need to be clear in your head कि इंटेग्रिटी क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, और सही को सही और गलत को गलत कहने का करेज होना चाहिए.
वो हमेशा आपको फायदा नहीं देगा, but that's fine. You can't lie to yourself. You can lie to the whole world, but you should never lie to yourself. And so Muna was, and he was, he knew African music and Pakistani music and was full of anecdotes and stories. Apartheid उन्होंने देखा था, उनके वालिदैन ने देखा था, कैसे वो रिवर्स हो रहा है. So, most theoretical, difficult constructs of inequality, hegemony, imperialism, he would explain it in the most simplest of ways, and would not, I mean, one thing which I learned, I think it was from my father also, but जो मैं बिल्कुल distinctly tangibly मैं उसको connect कर सकती हूँ, वो मैं मुना लखानी से कर सकती हूँ. So he made this whole presentation about zero waste, और कैसे जो है recycling is not enough, re-engineering होती है, and he connected one water bottle, mineral की water bottle, with the wars that are, really fought, because it's all about oil. और वो कनेक्ट आप कितनी चीजें पढ़ लें, आपको वो कनेक्शन उतनी क्लियरली नहीं बताया था किसी ने, ना आपको वो समझ में आया था इतनी इलिस्ट्रेटिवली. बट टुवर्ड्स द एंड ही वाज लाइक कि सारे लोग जो हैं वो पॉपुलेशन को और पॉवर्टी को बुरा कहते हैं, बट बोथ आर नॉट द प्रॉब्लम्स. द प्रॉब्लम इज greed, and you change that. The problem is disrespect to ecology and environment. आपके पास वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के पास 6 और कॉन्टिनेंट थे उनको खत्म करने के लिए, यूसर्प करने के लिए. हमारे पास यही एक है. और सस्टेनेबल इकोनॉमी तो तभी होगी जब सस्टेनेबल दुनिया होगी. जब आप दुनिया ही को, प्लैनेट को तबाह कर देंगे, तो कौन सी इकोनॉमी, क्या चीज लॉन्ग टर्म चलेगी? And then he showed us one African proverb. How do you eat an elephant? How do you eat an elephant? Yeah, that's what he asked us. And nobody knew. He said, you take a bite. And so, कितना भी छोटा स्टेप, कितनी भी छोटी कोशिश करनी चाहिए और करते रहनी चाहिए. You'll not, that's how you eat the elephant. That's how you'll eat up all your troubles. Because you keep on attacking it and attacking it and attacking it, you should know that you are in the right. So Mona Lakhani was one person who I met in 2005, completely chance encounter, 4 days. अच्छा, और हम उसमें, क्योंकि वो क्वेटा में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उस वक्त जियो का वो एक आते थे, वो दाढ़ी वाले साहब होते थे, बड़ा जियो का मशहूर प्रोग्राम था, तो दैट ऑल्सो हैपेंड. सारी चीजों में गाना बजाना, तफरी, अफ्रीकन, वो वहां पर. अब वो खुद भी कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी, बिकॉज अगेन खुरद आपाज, उनका काम जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉल्यूशंस के उनसे नाम ही है वो सोसाइटी, IDSP. तो वो बहुत उसके लोग भी बहुत अच्छे आए हुए थे. उन्होंने बहुत सारे, उन लोगों को एक पूरी गिफ्ट इकोनॉमी का वो काम था कि वहां पर बैठकर आप साथ में जुड़ के लोगों के काम करें. तो हमने बटुए सिए थे, जो वहां पर कोयटा का लेदर का जो एक काम है जिसपे कढ़ाई होती है और सब, वो लोग आए हुए थे, उनके साथ हम चप्पलें और वो बना रहे थे. तो हम मतलब सर्दी पड़ गई थी बिल्कुल अचानक से, तो आपके पास कोई सर्दी नहीं थी. तो इट्स वन मोमेंट, दैट्स द ओनली टाइम आई मेट हिम. उसके बाद तो कभी पाकिस्तान नहीं आए. फिर वो फेसबुक पर नहीं थे, हम भी फेसबुक पर, तो फेसबुक ही नहीं था. 2005 में तो फेसबुक नहीं था. 2011 में कभी जो है वो किसी ने उनको कनेक्ट किया फेसबुक पर, तो मैंने उधर देखा. देन आई कनेक्टेड विद हिम ऑन फेसबुक, एंड देन आई केप्ट ऑन स्पीकिंग टू हिम ऑफ एंड ऑन. एंड
तो मैं बहुत अभी भी देयर सो मेनी थिंग्स दैट कीप ऑन, मतलब सिर्फ चीजें जो नॉर्मल नॉर्मल कॉमन सेंस होता है और हम उसमें नहीं वो देखते. So he was the one who told me कि you should avoid all sorts of colas and diet 7 Up and everything, because look at all these chemicals. He was a chemist by his academic wo, and then he moved to environmental protection. और बड़ा अफ्रीका में तो उनका बड़ा नाम है एक्टिविज्म में और उसमें. even now he died in 2019, 2019 में. और अभी जो है वो लोग उनके फेसबुक पर लिख रहे होते हैं और उनको याद किया जा रहा होता है, सेलिब्रेट किया जा रहा होता है. सो यू नो ही वाज लाइक कि आप just look at the chemicals, and then he showed another list of the chemicals. सारे वो chemicals जो कि आपके वॉशिंग पाउडर और टॉयलेट क्लेंजर्स और उसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो केमिकल्स जो है आपके कॉर्नफ्लेक्स, जैम, जैम, शैम्पू, सोप्स, वो सब में इस्तेमाल होते हैं. सो ऑर्गेनिक हमारे पास, हमारी तो खैर इंडिजिनियस नॉलेज इतनी है, यू नो राइट फ्रॉम बेसन टू व्हाट नॉट, आप सब अप्लाई कर सकते हैं. बट नो, वी गो फॉर दिस because our lifestyle is just like so, you know, हम ठहरते नहीं है ना, भाग रहे हैं. quick and We easy, don't take it easy, and we also, instant yeah, quick and lifestyle. easy, बिल्कुल बिल्कुल. So जो रेडीमेड चीजें हैं वो अच्छी नहीं होती. अच्छा, but then there were things which, so he is one of the two people, three people actually in my life who I've met. I have had the uh, honor to meet, really, जिनको मैंने देखा है कि वो they walk the talk. मतलब जो वो कह रहे हैं वो करते हैं. भाषण तो बहुत सारे लोग देते हैं, यू मीट देम, हम खुद भी कम भाषण नहीं देते, मगर यू नो जो वो कह रहे हैं वो करते हैं. सो जैसे हम उनको, वो चाय में दूध नहीं पीते थे, तो ये लाइक कि दूध, लाइक वाई कोई मीठा नहीं खा रहे, दही नहीं खा रहे, क्यों नहीं कर रहे. सो देन ही टोल्ड अस कि उनकी एक फ्रेंड बीमार पड़ी थी, एंड ही प्रेड टू गॉड फॉर हर रिकवरी. एंड उन्होंने ये कहा था कि अगर वो रिकवर कर जाती हैं फ्रॉम कैंसर, then he will give up his most favorite thing, and his most favorite thing was milk. Okay? So yeah, so he gave up all the war. You know, that kind of giving without any conditionality, you know, voluntarily आप ये करें. और फिर मतलब पाकिस्तान में उनको कौन जानता था इस चीज को, but being true to himself. मतलब हमें तो नहीं पता था, चलो वहां पर उनको अफ्रीका में एक उनका स्टैचू भी होगा, लोग भी जानते होंगे. पाकिस्तान में आकर एक कप चाय पी लेते, यार किसको पता चलता, यू नो. नहीं नहीं, बट ही डिड नॉट डू दैट. इसी तरह जब भी आप वो पानी कुछ गर्म करते या पीते, ही वुड ऑलवेज शेक द ग्लास, एंड देन ही वुड से कि इससे जो है वो these are all vibes, the universe, energy, all vibes, this is, vibrations, yeah, these are energies. So ये energy will do this for you, you know, कि हमेशा it will be a healing wo whenever you are. So you know, little things जो छोटी छोटी चीजें और कमाल आदमी थे. बहुत उन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि वो है पियक्कड़ है और यू नो चर्सी है और बाल तो देखो, बिकॉज यू नो ही हैड दिस बिल्कुल अफ्रीकन लॉन्ग लॉक्स जो रेड लॉक्स होते हैं. बट ही न्यू अरेबिक म्यूजिक, ड्रम्स. एक चीज जो मैंने अभी तक उनके, सो आई वुड ऑलवेज डाउट माई सेल्फ, बिकॉज यू नो आप इन सारे
लोगों से मिले एंड यू फील अ लिटिल इनसिग्निफिकेंट कि आप क्या कर रहे हैं, आप तो उस तरह का कोई काम ही नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स एंड यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड व्हाट डू यू डू. So he was like, you know, what you're doing, you're as he would call me, my warrior sister. And I said, How are what you, you're sister? doing is warrior sister. And so he said, you know, you have to understand that you're beautiful. And what you're doing is beautiful. And I was like, nahi, Baap, what are you saying? I'm not beautiful. So he's like, no, you are beautiful. You are beautiful. First thing first, physical wo aapko ho chahiye, so you're beautiful to look at. Because what, and then you have a beautiful heart, Yeah. and then you have a beautiful motive, you know, you're very clear headed in terms of what you want to do, how you want to protect, you know, this earth, your own parents, how you want to go about it. So, you know, he did not make me feel कि oh, मैं तो कुछ intellectual pursuits तो मेरे हैं ही नहीं, you know. He जो makes us आप देखते हैं, यू मीट अ लॉट ऑफ, अब मैं मिलती हूँ बहुत सारी मैरिड वुमेन, सिंगल वुमेन या सिंगल पेरेंट्स के साथ, एंड दे से जो सेकंड, एज आई सेड कि मैं काम ही उस प्रोग्राम में कर रही हूँ, सो दे वांट, तो वो कहती हैं, इतनी सारे लोग आकर मुझे कहती हैं, खवातीन खास तौर पर, कि अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं कुछ करना चाहती हूँ, अभी तक तो मैं बच्चे संभालती रही. And you know, I stop then and there giving them information about courses and whatever. And I tell them, why are you saying this? Why are you belittling yourself and your contribution to the world? If you have raised one good citizen, you know, yes. one thinking, humane person, it's more than a millionaire or a billionaire or your degree from Stanford. Like, who cares for that degree if you have done that? But हमारे यहाँ, you know, domestic कोई भी काम हो, जब तक आपने किताब ना लिखी हो और आपको एक मेडल या पीएचडी आपके नाम के आगे ना लगाओ, we don't respect the Recognition name. नहीं मिलती. And what I learned, I hope I learned from Muna, and I hope I can carry this forward. Okay, you have to respect the individual first, the human beings and the humaneness in a person. That's what matters to me. So he touched me, moved me, inspired me, and is continuing to inspire me from up there, wherever he is. Yep. I'll That's not my ask message for the audience क्योंकि इस पूरी स्टोरी में इतने सारे messages, small little कहते हैं ना, nuggets सबके लिए है. Yeah, so one thing which I forgot to mention was Muna, because you know वो apartheid के उसमें हुए थे, और वहां पे obviously जो ब्राउन स्किन थी उसको बहुत लुक डाउन किया जाता था, अलग किया जाता था. जिसने भी अफ्रीकन हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको भी पता होगा कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ. नेल्सन मंडेला जो है वो ऑब्वियसली सबसे बड़े नोन वो हैं. सो मोना जो है वो, जो लोग जरा से बहुत होइटी टोइटी उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर इफेक्टेड एक्सेंट के साथ या उनके साथ बोलते थे, तो ही वुड से कि ये टेंगा है, एंड यू लाइक टेंगा क्या है, व्हाट डज टेंगा मीन? तो ही सेड कि टेंगा इज एन African word for a coconut, brown from the outside, white from the inside. White from the inside. White from the inside. So basically his message was कि आप अपनी जो authentic roots है ना, जिस जगह से आप आए हैं उस पर फख्र करना चाहिए, उसकी अच्छी चीजों को सीखना चाहिए, उसको, उसकी खराब चीजों को खत्म करना चाहिए. शऊर ये है, शऊर ये नहीं है कि आप किसी और की नकलची वो बंदर बन जाए. शऊर जो है, मुझे नहीं लगता कि शऊर रेप्लिका बनने में है, शऊर इवॉल्व करने में है.
And that's my message to everybody, whoever is listening to me, or wants to know more about Muna Lakhani, is that I think the decency of being is to be what we are, our roots, our language, our culture. उसमें खराब चीजें होंगी, यकीनन होंगी. No one is saying your honor killing सही है, भाई नहीं, उसको हटा दो. But don't be ashamed of your culture. और हर चीज आप, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों की अच्छी चीज अडॉप्ट नहीं करें. आज ही मैं काजी फाइज ईसा की एक स्पीच का वो सुन रही थी, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट समवन हु सेड, who read Quran, and somebody asked him ke, or he was a foreigner, and somebody asked him ke Quran, how, what does he make out of Quran? So he said it's a book of nature, because it talks so much about nature. And honest to God, Barira, I am 46 years old. Never, never have I ever been told this or came across this, that Quran is full of nature. And so let's look at the wonders, and so let's protect nature, not in a way, oh, we are just celebrating the Earth Day, but actually by connecting, by respecting, by using less water, by using less plastic, because plastic damages your soul, by making things out of your own hands, going zero waste. Going zero. Yeah. Thank you so much, Miss Amima.